condition that are associated to Venn diagram. So Venn diagram की conditions को finally discuss करने जा रहे हैं कि how we are going to solve condition associated to Venn diagram. Let's say three sets are being drawn for you. भाई मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ? Clear union B whole complement intersection C complement intersection देखिए first of all you are supposed to do the shading for A union B. Am I audible to everyone? Because I seems that it seems to be a connection error. Confirm कर दें. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, that's fine. It seems to be a connection error. Okay. So in the following situation, you are going to find A union B intersection C complement. So in the following case, first of all, you are going to shade for the following region, then you are going to shade for the following region, and lastly, their intersecting region will be your final answer. तो their intersection region will be your final answer. उसके लिए आप कैसे शेड करेंगे? So इसके लिए हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार शेडिंग फॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. भाई व्हाट्स द रीजन दैट इज एसोसिएटेड टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट? मुझे बता दें फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट रेफर किसको करता है? A union B whole complement refers to universal minus A union B. Yes or no? Universal में से आप A union B को subtract कर दें. So if you are subtracting universal minus A union B, it means you are shading all the region other than set A and B. You are supposed to shade all the region other than set A and B. यही complete region होगा ना? That I'm shading with red color. That's a clear representation for A union B. Intersection, whole complement. Agree? Intersection कह रहा हूँ, sorry, whole complement. Agree? Everyone clear? Everyone clear? Now let's talk about the region of C complement. C complement means universal minus set C. And if you are doing this region and if you are shading this region universal minus C, so what that region refers to? इसका मतलब यही होगा ना कि set C के other than आप सारा region shade कर देंगे. So what is the shading for this region C complement? So the shading for C complement will looks like this. ऐसे कुछ लगेगी ना, देखिएगा. Observe करें. All the region other than set C, including the outside region as well, including this outside region that I'm shading now as well. So bhai, this outside region after shading will look somewhat like this. ऐसा कुछ लग रहा होगा. Yes or no? अभी including this outside region as well, and this will somehow look like this. Yes or no? Agree? Now let's talk about final shading that I'm going to do with the purple color. Final shading की बात कर लेते हैं. तो भाई which region in both of the following region seems to be intersection of both the region. दोनों का ही intersection हो, दोनों का ही common region हो. Which region seems to be भाई intersecting region of both the region? Anyone? Anyone? The outside region, the inside region, the region of set A. कुछ तो बताओ. The outside region. This complete outside region. This complete outside region means this outside region seems to be the intersection region for given condition. So I am going to shade all the outside region other than set A, set B, and set C, and then erase the already shaded part. भाई इस तरह से आप फाइनल शेडिंग कर रहे होते हैं इन सिचुएशंस की कि आफ्टर शेडिंग ऑफ द फॉलोइंग रीजन you are going to erase the excessive part, the region that is not the shaded region of those conditions. So finally this will be your
final shaded region for the following situation. मैं इसको और आसान करके बताता हूँ भाई. There are many students who seems still not getting the following condition. और क्योंकि देखें, दिस कंडीशन इज समथिंग न्यू फॉर यू. आपने कभी भी सेट्स एंड वेन डायग्राम टॉपिक नहीं पढ़ा. यू हैवंट डिस्कस एनी ऑफ द सिचुएशन लाइक यूनियन इंटरसेक्शन बिफोर. तो इस तरह की कंडीशन को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? चले भाई, एक लम्हे के लिए ऊपर वाले पार्ट को भूल जाएं. लेट्स फॉरगेट दिस पार्ट. मैं इसी पार्ट की दोबारा बात कर रहा हूँ. द पार्ट दैट आई हैव रिटन राइट हियर. लेट मी डिस्कस दिस पार्ट. भाई मैंने आप लोगों को कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी होल complement intercept C complement. That's what I asked you to find. And I asked you to shade the region. Obviously, you are supposed to shade the region of the Venn diagram. So if you are supposed to shade the region of the Venn diagram, so how are you going to shade? अब सर क्वेश्चन ये है कि आप तो बड़े इजीली ऑन स्क्रीन शेडिंग कर देते हैं, आपके पास टूल्स भी प्रेजेंट है. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इन अ पेपर? हम पेपर में कैसे करेंगे? मतलब हम क्या दो कलर्स की पेंसिल लेके जाएं और दो कलर्स की पेंसिल ले जाने के बाद शेड करें फर्स्ट रीजन को, फर्स्ट इस वाले रीजन को, देन इस वाले रीजन को दूसरी कलर पेंसिल से, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड इंटरसेक्शन? नो नो, जरूरी नहीं है. इट्स टोटली अप टू योर अंडरस्टैंडिंग. आप इस काम को डायरेक्टली भी कर सकते हैं. देखिए, मैं दो तीन अप्रोचेस बताऊंगा फॉर सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट अप्रोच. दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस अप्रोच नंबर वन. दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज अप्रोच नंबर वन, दैट इज कंप्लीट शेडिंग. कि आपने कंप्लीट शेडिंग करा एंड make the thing easier for you, make the thing that easily work for you. So that is condition number one for solving this type of situation. Now let's talk about condition number two for solving this type of situation. Let's talk about condition number two. देखिए, आपने एक काम करा. What that work is, आप normally numbers को deal कर लेते हैं. You used to deal with the numbers. तो आपने first of all at every singular position you have written a number. जैसे I have written one here, two here, three here, four here, five, then six, then seven, then eight. हर पोजीशन पे जैसे एक नंबर लिख दें. वट एवर पोजिशंस आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग सेट्स एंड देयर इंटरसेक्टिंग रीजन्स, जस्ट राइट ऑल द पोजीशन बाय अ सिंगुलर नंबर. एक सिंगल नंबर से उन सारी पोजीशंस को स्पेसिफाई कर दें. अग्री? Have you specified all the position by this singular number? Now what? You are going to find A union B whole complement. भाई नंबर से लिख दिया तो अब आप फाइनली सेट ऑपरेशंस जैसे हम प्रीवियसली परफॉर्म कर रहे थे. आर यू एबल टू परफॉर्म दैट सेट ऑपरेशंस? यस सर, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. A union B whole complement simply refers to universal minus A union B. और अगर आप यूनिवर्सल में से A union B सब्ट्रैक्ट करेंगे, so obviously you will get the following region, and whatever elements present in the following region are 7 and 8. Yes or no? Agree? Agree everyone? Everyone Yes. clear? Okay. Now let's talk about the C prime region. C prime region means universal minus set C. Universal में से set C subtract कर दें. If you are going to find universal minus set C, it means which region? It simply means this particular region and the outside one. यही region होगा ना आपके पास. That I have just roughly shaded with a purple color. तो set C minus कर रहे हैं. What are the elements that are associated in the following region are 1, 2, 5 and 8? Yes or no? ऐसे ही है बेटा. Agree everyone? Yes. अच्छा, what you are going to find between these two sets? Their intersection, their union. बोलो. Intersection. So what's the Intersection. intersection of the following two sets? भाई क्या होगा इन 8. दो सेट्स का इंटरसेक्शन? भाई क्लियरली पता लग रहा है 8. सो इट मींस यू आर गोइंग टू शेड दिस आउटसाइड रीजन. और अब मेरी बात सुनना गौर से. यू आर गोइंग टू शेड दिस आउटसाइड रीजन. ये इस 8 से कंफर्म हो गया. अब मेरी बात सुनना गौर से. एग्जामिनर हैव गिवन यू द फॉलोइंग कंडीशन, नॉट दीज नंबर्स. These number is something that you have pre-assumed by yourself to solve the following condition by methodology number 2. और ये पूरा काम करने में will hardly takes maximum 2 minutes. तो भाई अब एक बात गौर से सुनना. फाइनली पता लगा कि intersection of the following two sets comes out to be 8.
तो अब इन सारे ही नंबर्स को इरेज कर दो और मान लो ये नंबर थे ही नहीं, जैसे ये नंबर थे ही नहीं, एंड सिंस द 8 इज इन दिस आउटसाइड रीजन, तो फाइनल शेडिंग बिलोंग्स टू दिस आउटसाइड रीजन दैट नाउ यू आर गोइंग टू शेड। भाई करनी तो शेडिंग ही है, करनी तो आप लोगों ने शेडिंग ही है, लेकिन कैसे करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डायरेक्ट शेडिंग कर लें एज पर मेथडोलॉजी नंबर 1, या नंबर्स नेम करके उनकी वैल्यूज जल्दी से कैलकुलेट करके शेडिंग कर लें, दैट्स द मेथडोलॉजी नंबर 2। इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू कि भाई आपको कैसे कन्वीनियंट है उस पर्टिकुलर सिनेरियो को सॉल्व करना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आंसर तो सेम ही आएगा ना, आंसर वोंट चेंजेस, आंसर विल बी सेम फॉर एनी ऑफ दो सिचुएशन। अब भूल जाओ कि ये नंबर थे, ये नंबर जैसे कि थे ही नहीं, और आपने क्या करा, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इस सिचुएशन को सॉल्व कर लिया। अगेन दिस एक्सेसिव नंबर टेक्निक विल टेक एडिशनल 2 minutes for those who are having confusion in this methodology number 1। चलें आपको एक लास्ट मेथोडोलॉजी नंबर 3 बताता हूँ, बट बिफोर दैट आई हैव टू जस्ट पिक वन मोर सेट। इसी सेट डायग्राम को मुझे पिक कर लेता हूँ अपनी ही गिवन कंडीशन से, सो दैट आपको उसी में ही क्लियरली बता सकूँ, so that we can discuss clearly in that particular space. Okay, bhai. Let's move towards methodology number 3. Methodology number 3 is quite similar to methodology number 1. First, let me write the following condition. You are supposed to find A union B whole complement intersection C complement, and you are supposed to shade the region for the following situation. Let's talk about methodology number 3. भाई मेथडोलॉजी नंबर 3 क्या कहती है? मेथडोलॉजी नंबर 3 ये कहती है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू मेथडोलॉजी नंबर 1 और एग्जैक्ट आई वुड से कॉपी ऑफ मेथडोलॉजी नंबर 1, बट इन दैट केस यू आर नॉट, इन द फॉलोइंग केस यू हैव शेडेड द रीजन। अब मैं वो बात कर रहा हूँ कि आप जो कर रहे होंगे फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ सिचुएशन एंड फॉर शेडिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीजन, एंड ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि आप बैठ के कलर करने लग जाएं उसको। तो आप क्या कर रहे होंगे, लेट्स डिस्कस। आई एम टेकिंग टू कलर, ब्लू एंड ग्रीन। भाई फॉर से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को आई एम जस्ट मार्किंग विद ब्लू कलर, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को आई एम मार्किंग विद ब्लू कलर। तो भाई अगर मैं इस कंडीशन को ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, या आई वुड से कि ब्लू कलर भी नहीं, आई एम मार्किंग दिस रीजन बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन, आई एम शेडिंग दिस रीजन बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब क्या हुआ भाई, दिस रीजन रेफर्स टू अ रीजन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट आई एम मार्किंग बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ऐसी ड्रॉ होंगी ना बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस, यस और नो? यू आर गोइंग टू ड्रॉ the horizontal agree, yes or no, for A union B whole complement region? बेटा कुछ तो बोलो, are you going to mark A union B whole complement region by a horizontal line? So इसी तरह के region में horizontal lines draw हो रही होंगी, yes or no? The lines that I'm going to draw as in horizontal lines will look somewhat like this. And now let's talk about C prime region. Hey, C prime region के लिए let's draw the following condition via vertical lines. Vertical lines कैसे draw होंगी भाई C prime वाले region में? So the vertical lines that I'm going to draw in this C prime region will look somewhat like this. Will look somewhat like this. चलिए मैं color ही change कर देता हूँ ना, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। द वर्टिकल लाइंस दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉ इन सी कॉम्प्लीमेंट रीजन विल लुक समवट लाइक दिस। अब देखिए मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूँ, वर्टिकल लाइन विल लुक समवट लाइक दिस। फॉर द फॉलोइंग रीजन द वर्टिकल लाइन will look somewhat like this. Yes or no? Agree? Agree? Yes. तो भाई विच रीजन इज ग्रेडेड रीजन, जो इस तरह से ग्रेड कर रहा है रीजन, द रीजन दैट इज ग्रेडेड by both horizontal and vertical lines, the region that is graded by this both horizontal and vertical line refers to the intersecting region। वो ही तो intersecting region होगा जहाँ पे इस तरह से ग्रेड्स बन रहे हैं। So the
following region that is graded by the following lines will be the only outside region. तो भाई इन लाइंस को इरेज कर दें. The graded region will only be the outside region. तो भाई इन लाइंस को इरेज कर दें. तो ये टेक्निक दिस टेक्निक सिमिलर टू टेक्निक नंबर वन. बट आपने बस बाइफरकेट क्या करा कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस की हेल्प से उनको ग्रेड कर दिया. बिकॉज यू वोंट हैव इनफ टाइम फॉर शेडिंग ना. आपके पास शेडिंग करने का टाइम थोड़ी होगा. You won't have enough time for shading as per the methodology one. So I told you कि भाई methodology number two से कर लो अगर shading समझ में नहीं आ रही. By marking each position by a singular number. And then after this, you are going to adopt methodology number three. That's the quite similar methodology to methodology number one. Any problem, any confusion, anything that needs to be repeated. बोलो बेटा. क्लियर है बक्का बक्का. Agree. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Now we are going to solve following two questions one by one. जल्दी से करेंगे without wasting any time. बहुत ही simple question है. भाई कंडीशन देखो. You are supposed to shade the region P prime intersection Q union R. चलो भाई मैं तो पिक कर रहा हूँ अपने highlighters. Q union R. Which region refers to Q union R? तो भाई if I'm talking about Q union R, तो following region refers to Q union R. Yes or no? यही region होगा. Agree? Yes. If we are talking about P complement, so which region refers to P complement? Any region other than set P. So what's the region other than set P? This outside region and the region of set Q as well as set R. The region of set Q as well as set R. यही region होगा. Agree? So which is the final shading region? भाई देखो ना आपने कैलकुलेट करना है उन रीजन्स का इंटरसेक्शन और यूनियन. आपने कैलकुलेट करना है उन रीजन्स का इंटरसेक्शन और यूनियन. इंटरसेक्शन ना. So if you are supposed to find intersection, so obviously this will be the final shaded region. This will be your final shaded region for the following situation. Yes or no? यही final shaded region कहलाएगा ना आपके पास उन given situations के लिए. Agree? और अगर आपने यूनियन कैलकुलेट करना होता तो ये डायग्राम एज इट इज शेड होती. यस और नो. इफ यू आर सपोज टू फाइंड यूनियन तो यूनियन रेफर्स टू ऑल टुगेदर. तो भाई फाइनल यही शेडिंग वैलिड रहती ना. मेरी बात समझ रहे हो. भाई नॉर्मली एग्जामिनर इंटरसेक्शन की कंडीशंस देता है. अगर एग्जामिनर आपको यूनियन की कंडीशन दे दे तो ऑब्वियसली यही कंडीशन वैलिडेट करेगी. अच्छा बाय द वे कंडीशन इज ऑफ इंटरसेक्शन. सो आई एम इरेजिंग दिस excessive part. I am erasing this excessive part that is not the intersecting region for the following situation. So I am erasing this excessive part. So this excessive part looks somewhat like this. ऐसे कुछ होगा ना. Yes or no? Clear हो गया बेटा. पक्का पक्का. Agree? Agree. Yes. Okay भाई. Last part that you are going to solve on your own. Okay. Just try this part on your own. Then I'm going to write. Then I'm going to shade its region by myself directly. Directly इसके region को shade करूँगा. First try by yourself. Okay. Then I'm going to shade its region directly. You can use any of the methodology 1, 2, 3. जो आपको easy लगे. Okay. Whatever you feel easier for you, working for you, उससे shade कर लें. Giving you 2 minutes. Last question. Come on, bhai. Last 1 minute. Last 30 seconds. Done?
It's coming A and B. Uh, Only part of A and B not included to C. Yes or no? Only part of A and B that is not included to C. Yes or no? ऐसा reason? Agree? Yes. Okay, bhai. Okay, bhai. So hopefully all of you are cleared about the following situation of sets and Venn diagram by all of the following three methodologies. So hopefully